everyone, welcome to Unacademy. So guys, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज द लेसन 1 फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस. Okay, let's go ahead. Those who are watching me for the first time, guys, this is something about me. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years. I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exam like CAT, SNAP, CT and other MBA entrance exams. I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So guys, simple agenda for today's session. We are going to learn the basics of profit and loss and how to use the multiplication factor, how to use the ratio. So more or less it will be a part of percentage जो हमने last session में पढ़ा था. जिन्होंने percentage किया था उनके लिए ये बहुत easy रहेगा. And those who have not watched that last session, not attended, they can just go and watch that session. It is available on YouTube. So guys, let's begin. Before we start, let me tell you, you can join us on YouTube. Unacademy CAT4MBA is our new channel for CAT, and we do have one Telegram group where you'll be getting the PDF material for the sessions that we conduct on YouTube as well as on the Unacademy platform. So those who are willing to go for the plus subscription of Unacademy, these are the very amazing plans from Unacademy, where you'll get the mock test to assess yourself and you'll be interacting with the many top educators from India. So you can join Unacademy plus subscription. And those who are willing to go for the plus subscription, do not forget to use this code. It is SHYAM1, SHYAM1, so that you will be getting a 10% off discount. So let's begin, guys. Those who are watching me live, quickly drop in the comment section right there. Good evening everyone. Let's begin. Yes, hopefully everything is fine. I'm audible to everyone. Okay, so guys, profit and loss में पहली चीज हमें सीखनी है, एज आई सेड, ये कंप्लीटली प्रॉफिट एंड लॉस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द परसेंटेज. तो तुम्हें परसेंटेज आना चाहिए, दैट्स द वन रिक्वायरमेंट. ओके, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज सबको क्लियरली पता होनी चाहिए. आफ्टर दैट the next important thing is just you should know the terminology. So terminology समझना बहुत important है यहाँ पे. Let's to understand the terminology, let's take an example. Let's say I bought something for rupees, let's take an example. I'm a shopkeeper and I have bought an article for rupees 10,000. okay, my cost price is 10,000. okay, and now I want to sell this article at a profit. So definitely मेरे शॉप में इसको ज्यादा में अगर बेचना है तो श्योरली मैं इसका मार्क प्राइस कुछ ज्यादा मार्क करके रखूंगा. ये तो मैंने खरीदा 10,000 में, तो डेफिनेटली मैं इसको ज्यादा मार्क करूंगा. लेट्स से आई मार्क एज, वी कॉल इट एज मार्क्ड प्राइस. मैंने बताया. ओके, तो बताने का प्राइस या मार्क प्राइस, और यू कैन से इट इज लेबल प्राइस. मैंने इस पे लेबल कर दिया कि ये 15,000 का है. ओके, and to attract customers, what I did, I'm giving a discount of 20%. A discount of 20%. Now understand, जो मेरे शॉप में खरीदने आएगा ये आर्टिकल, उसको तो ये प्राइस डेफिनेटली नहीं बताएं. 10,000 पे मैंने खरीदा है, राइट, एंड दिस इज द मार्क प्राइस. तो हम उसको बताने वाले, ये 15,000 का है, बट now for, and you will be getting 20% discount. So surely we will be giving discount on mark price, that is 15,000. So 20% of 15,000, 10% कितना होता है? 15,000 का 10% होगा 1,500. So 20% discount, that means there is a discount of 3,000. So I'll sell this article. Actually मैं उसको बेचूंगा कितने में? जो भी कस्टमर्स अगर खरीदेगा तो फाइनल प्राइस he'll be giving me is 15,000 minus 3,000. डिस्काउंट में उसे दे रहा हूँ, तो 15,000 minus 3,000 होता है 12,000.
Now look at the price, I'm still in profit, अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ, मुझे 10,000 में मैंने खरीदा, whatever goes out of my pocket, that is my cost price, and whatever comes to me, that is my selling price. So profit is simply the difference between selling price and cost price, right? Loss is also the difference between cost price and selling price. Okay, बट वहां पे क्या होगा, अगर प्रॉफिट है तो हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, एंड लॉस होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस कम होगा. So that's why the difference between cost price minus selling price in case of loss. So here there is a profit of 2,000. So now if I want to calculate what is my percentage profit, so definitely I'll compare my profit with my cost price कि मेरी जेब से कितना खर्च हुआ था. तो गाइस परसेंटेज बेसिक्स में हमने सीखा है ऑलरेडी कि जिस वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता है दैट वैल्यू कम्स इन द डिनोमिनेटर. तो प्रॉफिट रहे या लॉस रहे, इट इज ऑलवेज इन कंपैरिजन विद द कॉस्ट प्राइस, बिकॉज एज अ शॉपकीपर मैं क्या सोचूंगा कि मैंने जिस कॉस्ट पे खरीदा उस कंपैरिजन में मुझे कितना ज्यादा मिला, या फिर लॉस अगर हुआ है तो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कितना कम मिला. सो दोनों बार कंपैरिजन जो है वो कॉस्ट प्राइस के साथ ही हो रहा है. दैट्स व्हाई परसेंटेज प्रॉफिट हियर इज 2,000 rupees profit compared to 10,000. 2,000 compared to 10,000, that comes out to be, all this calculation, that will definitely 20%. It's a straightforward calculation. Okay, so this is how we can calculate the percentage profit or percentage loss. Hopefully all of you understood कि बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के टर्मिनोलॉजीज. तो मैंने कौन से टर्म्स बताया अभी तक, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एंड मार्क्ड प्राइस क्या होता है. दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड अप टिल नाउ बाय यूजिंग दिस एग्जांपल. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर मैं यहाँ से परसेंटेज हटा देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस तो सबको समझ में आया हो गया. डिस्काउंट क्या है, यहाँ पे 3,000 डिस्काउंट दिया गया था. Basically this discount is the difference between mark price and selling price. तो एक प्राइस होता है जिसपे मैं खुद खरीद रहा हूँ, एक प्राइस मुझे अगर उसको रीसेल करना है तो मैं उसको ज्यादा बताऊंगा, एंड फिर सेकेंड वन इज द सेलिंग प्राइस जहां से मैं डिस्काउंट दूंगा. अगर डिस्काउंट 0% है तो डेफिनेटली मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल. दैट्स व्हाट यू कैन से. अगर मैं ये 20% की जगह पे 0% देता हूँ, डिस्काउंट 0%, then mark price is equal to selling price. That you can remember, or it's simple common sense. हो तो तुम्हें समझेगा, जितना मार्क किया उतने में there is no discount, so mark price can be equal to selling price if there is no discount given, right? So let's go ahead and मेक अ पॉइंट कि तुम्हें ये सारे टर्म्स समझ में आए. सो होपफुली यू अंडरस्टूड मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एंड कॉस्ट प्राइस क्या होता है. तो प्रॉफिट इज, ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी चाहिए. द कॉस्ट एट व्हिच वी बाय, सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस, द लेबल्ड प्राइस जो हम उसको मार्क कर रहे हैं. नाउ द प्रॉफिट इज डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये दो प्राइस से हमें पता चलेगा कितना पैसा हमारे पास से खर्च हुआ था हमारी जेब से, एंड कितना पैसा हमें वापस मिला. So that will decide if it is profit or loss. If it is profit, definitely selling price is greater than cost price, and if it is loss, definitely cost price will be less than selling price, right? Then one thing, that is discount. Discount कितना मिला ये कैसे पता चलेगा? Whatever the difference between mark price and selling price, मतलब बताया कितना गया, लेबल कितना लगाया था, या मार्क प्राइस कितना था, एंड एक्चुअली कितने में सेल किया. डिफरेंस लेबल प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस इज द discount given. Okay, and if there is no difference, mark price is equal to selling price, there is a discount of 0%. You can say 0% discount है तो mark will be equal to selling price, right? So definitely mark price is always greater than selling price, greater than or equal to. If there is no discount, then they can be equal. Okay.
Then after that, if you want to calculate the percentage profit, now this is very important. Percentage profit, you can remember this in wording, percentage profit or percentage loss is always on cost price. Remember this one. And percentage discount is always on mark price. प्रॉफिट जो होता है या लॉस होता है, उसको अगर तुम्हें परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस कैलकुलेट करना है, तो यू बी ऑलवेज कंपेयर दैट प्रॉफिट और लॉस विद द कॉस्ट प्राइस, एंड डिस्काउंट इज ऑलवेज कंपेयर टू द mark price. So that's how this formula is come. Percent profit is selling price minus cost price divided by cost price into 100. So denominator will be cost price. Remember this. Okay. तो जिस वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता है, दैट वैल्यू कम्स इन द डिनोमिनेटर. इवन परसेंट लॉस, cost price will be in the denominator, and if we calculate the percentage discount, the denominator will be mark price. So that's what you need to understood. Hopefully all of you understood. Those who are watching this video right now, guys, give me a thumbs up if you understood up till now. So these are the simply means basics of profit and loss. Simply you need to understand कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है. ये हो गया टर्मिनोलॉजी रिलेटेड. बट द नेक्स्ट थिंग इन इंपॉर्टेंट थिंग इज परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त कंपैरिजन किसके साथ होता है. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर. एंड परसेंटेज में भी मैंने काफी एम्फसाइज करके बताया था कि जिस वैल्यू के साथ कंपैरिजन होता है, दैट वैल्यू कम्स इन द डिनोमिनेटर. सो हियर इन प्रॉफिट एंड लॉस, रिमेंबर परसेंट profit or percent loss is always in comparison with the cost price, and the discount is always in comparison with the mark price. I know most of you most of the students think that they know this thing, but the problem is when you actually do the calculation, I don't know the reason, most of the students, what they do, they keep on calculating the percentage on selling price. So understand here, there is nothing in compared to selling price. तो selling price पे कभी भी हम percentage calculate करते नहीं है. That's what you need to be very careful about, because इसमें silly mistakes होते हैं and then you lose the confidence कि क्यों मुझे confusion हो रहा है इस topic में, या फिर क्यों questions गलत हो रहे हैं. Keep these basic points in mind and you'll never get wrong in profit and loss. So let's go ahead, guys. So let's start with the questions now. Is the first question, and in next 5 questions, these will be the base builder question, you can say concept question तुम इनको बोल सकते हो, जहाँ पे हमें just समझ लेना है कि क्या हमने अभी तक जो किया वो हमें समझ में आया, and we are just going to cross check the thing. So try to solve these questions at your own. Each and every question you can solve within just 30-40 seconds max to max. Okay, so if mark price is 2000 and there is a discount of 20%, find the selling price. So definitely discount is always on mark price. You can directly take the 20%. 20% is 2000. There's a discount of 2000, so selling price will be 20,000. Oh, sorry, it was 2000. I'm sorry. 20% of 2000. Really sorry. 20% of 2000 is going to be 400. So there is a discount of 400. So 2000 minus 400, that comes out to be 1600. Question, I'm quite sure all of you know this. Okay, let's go ahead. This is the second question. Let's write. If the cost price is 1700, the cost price is 1700 and there is a loss of 15%, how to get the selling price? So simply loss is also in comparison with the cost price. So simply you can see 1700. So selling price must be less than the cost price and the loss. And loss is of 15%. So 1700 का 10% अगर हम calculate करते हैं, that is 170. 5% if you calculate it is 85. We add this number, we get to 55.
Right, so there is a loss of 255. Loss of 255 on 1700. So 1700. So selling price will be equal to 1700 minus 255. So if we subtract 200, that comes out to 1500. 1450 should be 1445. So these two are really simple question, guys. So hopefully you understood the basics. एक ये देखो, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ. नाउ आई वांट यू टू बी very clear cut with the clear about this question. Think very clearly and let me know in the comment section what is your answer. If the selling price is 7500 and there is a profit of 25%, I'm supposed to calculate what the cost price. How to solve this? The common mistakes students do, they calculate, all of you know that selling price is going to be greater than cost price because here is the profit, right? Okay, so if you just take 7500 minus इसका 25% तुम निकालोगे, 25% of this, that is 1/4. 25% का फ्रैक्शन 1/4. 1/4 of 7500 अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो, इट्स कंप्लीट बिकॉज 1/4 कॉस्ट का था, नॉट ऑन सेलिंग प्राइस. तो 7000 minus 25% of 7500. Do not do this because तुम किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, 25% कैलकुलेट कर रहे हो सेलिंग प्राइस पे. और अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया था, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज इन कंपैरिजन विद द कॉस्ट प्राइस, राइट? तो 1/4 इसका नहीं था, 1/4 तो कॉस्ट प्राइस का था. सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज cost price plus 25% of cost price, that must be equals to selling price. Now if you want to use the fraction, that's perfectly fine. अगर किसी को fraction नहीं use करना है, they can simply write it is 125%, that is 125 upon 100 into CP is SP, and selling price we know that is selling price given is 7500, right? You solve this 5 times, 4 times, 5 से कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 1500 into 4 कर दो, 1500 into 4 आएगा 6000, right? So cost price of 6000, and if we add 25% of 6000 to it, yes, right Shivam? Okay, the other way to do is 7500 and there's a profit of 25%. The other way you can do it is, if cost price is 100, selling price must be 125, and if you take the ratio, so आज हमें ये सीखना था कि हम यहाँ पे ratios कैसे यूज कर सकते हो. ओके, तो ratios अगर यूज कर रहे हैं तो तुम लिख सकते हो 4:5. So if the cost price is 4, selling price is 5. Now we are given with the selling price as 7500, which comes out to be 1500 times of 5, right? 15 into 5 करोगे तो 75 हो जाता है. You should multiply this also by 1500. This is how you can simply get it at 6000. So these are the two methods you can apply.
you want to solve this way, that's perfectly fine. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, इट्स सिंपली अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे भी सॉल्व होगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी, कॉस्ट प्राइस प्लस 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर किसी को फ्रैक्शन से जाना है तो दिस वाज द डेसिमल 1.25 तुम लिख सकते हो, एंड दिस इज गिवन एज 7500, सो इट इज 5/4 CP 7500, so surely you'll be getting your 1500, the cost price must be 6000. So these are the different ways to solve it, that's any ways जो भी तुम्हें comfortable लगे उससे solve करो। If you look at this topic, it is going to be just a percentage. Try this. Next one, question number 4. Okay, by what fraction should we multiply selling price to get the cost price? This is a very simple question. If there is a loss of 80%, that means loss of 20%, that means 80% of CP is SP. So 80% is 4/5. We are supposed to multiply the selling price. Okay, multiply price. So cost price must be 5/4 of SP. So by what value you should multiply price? Answer is 5/4. That's a simple concept question, you can say, right? You can use the fraction method or decimal number method, या फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। So whatever the method is comfortable to you, you can use that. Okay, so here's the question, Shivam. Let's try it. Right, Shivam? Correct. 5/4 is the correct answer. If the selling price is double, the profit triples. What is the percentage profit? Any answers, Shivam? Selling price is doubled, profit triples. Find the percentage profit. Now these questions are going to be really interesting, guys, once you understand the concepts.
you'll definitely enjoy the things, because then you'll understand what exactly the level of means what exactly the type of questions that comes in profit and loss. There is a different variety of questions can be framed इन कंप्लीट अरिथमेटिक. तुम अरिथमेटिक के कोई भी टॉपिक देखो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न्स बनते हैं. सो होपफुली यू कैन डू इट. The selling price is double, the profit triples, find the percentage profit. Is it 1? सेलिंग प्राइस अगर डबल किया तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है. नॉट परसेंटेज प्रॉफिट, इट इज सेड प्रॉफिट ट्रिपल्स. तो सुनो, अगर इफ आई से माय कॉस्ट प्राइस इज एक्स एंड माय सेलिंग प्राइस, बिकॉज वी आर नॉट गिवन कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है, राइट? Can we take these values, Shivam? So what will be the profit here? Profit is selling price minus cost price. Selling price cost price. Profit should be y minus x. Are you clear up till now, Shivam? Have you understood this part? Now I'm going to double the selling price. Okay. I'll double selling price. So my cost price will remain x and my selling price will double to y. So if this happens, now my new profit will be 2y minus x. Right, Shivam. That's correct. Okay. So we know this profit triples in the sense this is the new profit and this was the original profit. That simply means 2y minus x is triple thrice of y minus x. It's not a tough question at all and it should not take more than half minute to frame this equation and solve it. Okay, so let's say 2y minus x is 3y minus 3x. तो 3x इधर ले लो तो ये हो जाएगा 2x, 2y इधर ले लो ये हो जाएगा y. तो y is 2x, राइट? तो शिवम तुमने आंसर 1 दिया. आंसर 1 कैसे हो सकता है आंसर? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? डू यू मीन 1%? 1% is a wrong answer. Is it 1%, Shivam? You solved it correctly, everything is fine. And let's say x is y is 2x, means if the cost price is x, the selling price is 2x. That is double. Yes or no? If the cost price is 1, selling price is 2, so there is a profit of is 1 compared to 1. So what is the percentage profit? 1 compared to 1 into 100. डबल मीन्स होता है शिवम, आंसर होना चाहिए था 100% प्रॉफिट, नॉट 1%. तुम 1 रुपीज की चीज 2 रुपए में बेच रहे हो, 100 रुपए की चीज 200 रुपए में बेच रहे हो, या फिर 5 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे हो. डबल प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना हुआ? 100% प्रॉफिट. होपफुली यू अंडरस्टूड दिस पार्ट. Let's go ahead and solve this question. Next one. A shopkeeper loses 10% by selling oranges at rupees 162 per kg. At what rate must he sell them to gain 20%?
From every question from now onward, you will spend 1 minute, try it at your own, and then I'll go ahead with my explanation. So make sure you are with your pen paper लेके तुम ready हो अभी questions complete करने के लिए. It will be a practice now. So we are going to speed up, guys. चलो, go ahead. A shopkeeper loses 10% by selling oranges at the rate of 162 rupees per kg. At what rate he must sell them to gain 20%? अभी उसको 20% गेन करना है. पहले तो 20% लॉस हो रहा था, 162 में बेचता है तो 20% लॉस होता है. तो अभी कितने में बेचना चाहिए, क्या कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, so that he'll gain 20%. Any answer, Shivam? Listen, हमें क्या क्या दिया हुआ है. So first of all, tell me, Shivam, if it is selling price or cost. 162. There is a loss of 10%. And this is going to be, this is not cost price, right? Okay, this is selling price. So you should understand that, that's the important thing. And now we are not supposed to find the cost price kitna hoga. So Shivam, first of all tell me, Shivam, 150 is not the right answer. Shivam, it's not 150. Yes. What will be the cost price, Shivam? Can you tell me the cost price? What should be the cost price? Now, how to get the cost price? The important thing you can understand here, the most important thing to understand is you cannot take 10% of this value because this is selling price. Loss जो है वो इस पे हुआ है cost price पे, and we don't know the cost price. Let's say that cost price is X. No, it's not 160, Shivam. Okay, let me explain you what exactly it is. Okay, cost price is X. So let's say cost price minus 10% of cost price. That must be selling price. Am I right? So 10% अगर तुम minus करोगे तो this is 90% of cost price. तो जो ये 162 है, that is just 90% of cost price because there was a loss of 10%. Hopefully you understood this, and this is the concept only which keep on repeating in profit and loss. एक बार तुम्हें समझ में आया, एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, दो क्वेश्चन में नहीं आएगा, 2-3 क्वेश्चंस तुम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ में आएगा क्या एग्जैक्टली गलत हो रहा है. So hopefully you understood, Shivam, this part. Okay, now do the calculation part very carefully. Let's not make any mistake here, otherwise फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें समझने में कुछ गलती हुई है. Be careful your calculation part. Okay, so calculation part, I can simply divide it by 9.
9 1s are 9 हो जाएगा, 72, 9 8s are 72. So the cost price is 180, not 160. Hopefully you understood this. Right, yes. Then at what rate must he sell them to gain 20%? Now the cost price will remain same. The cost price we have calculated as 180. Now selling price कितना होना चाहिए so that उसको profit हो जाए 20%. So 20% of what? 20% of what? 20% of 180, right? So what will be 20% of 180? Has to be 36. So there is a profit of 36 rupees. There must be a profit of 36 rupees so that he'll gain the 20%. So the new selling price must be 180 plus 36. The final answer will be 216. Hopefully you understood this. A typical question from profit and loss. Is there any doubt up till now? Okay, so let's go ahead with the next question. Try this now. A man buys apples at the rate of 5 rupees 4 and sells them at the rate of 4 rupees 5. The profit percentage of the vendor is. So when he buy, the rate is he buy 5 apples for rupees 4, and when he sells 4 apples for yes, that's great, Abhishek. So let's go ahead. Any answer for this question, guys? A man buys apples at the rate of 5 for rupees 4 and sells them at the rate of 4 for rupees 5. Then what is the percentage profit of the vendor? So the first thing you need to understand, this is cost price and selling price. That's perfectly fine. But don't tell me profit is of rupees 1. If we take profit rupees 1, 4 rupees में खरीदा तो 5 रुपए में बेचा, there is a profit of rupees 1 and cost price was 4. So 1 by 4 into 100, that comes out to be percentage profit comes out to be 25%. It's completely wrong. And why is it wrong? तो सिंपल फॉर्मूला तो हमने सीखा था, प्रॉफिट इज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. बट हियर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज द प्रॉब्लम इज he is buying at the rate of, this is not the actual quantity he is buying. So we need to consider some quantity so that जितना खरीदा उतने हमें बेचना पड़ेगा.
इट कैन नॉट बी लाइक आई कैन नॉट से कि मैंने 5 एप्पल खरीदे 4 रुपीज के, 4 रुपीज मेरा कॉस्ट हुआ, उसमें से 4 एप्पल 4 एप्पल्स में बेच देता हूं, तो एक एप्पल तो मैंने बेचा ही नहीं अभी तक, तो हाउ कैन आई डिसाइड द point at the means the moment I'll be selling that fifth apple, then only I'll be able to calculate what exactly the percentage profit or loss in the complete transaction is, right? So you cannot do this way directly, right? So how to solve it? So the traditional way in the books, most of the student follow this method, जिन्होंने स्कूलिंग में सीखा हुआ है उस हिसाब से सब लोग चलते हैं, या फिर ज्यादातर लोग यूज टू होते हैं इस मेथड से. I'll just sharing the two methods to solve this question. Okay, I don't know if you know the method or not, so if you know the method you can just go ahead with the shortcut that you know, but let's understand how that shortcut was built, and means let's understand the exact concept behind this, how why we can use the shortcut. Okay, so first of all I'll tell you the traditional way to do just the equation method, you can say. I want you to understand guys. Okay, so those are who are the beginners, I'm teaching for those, and jinko ye already aata hai, that's perfectly fine guys. Okay, that's good. Okay, so 5 apples for rupees 4. So can you tell me what is the cost of one apple? The cost of one apple will be, we need to divide this 4 rupees in 5 parts. So rupees 4 divided by 5, that comes out to be 0.8, right? 0.8, और you can say चलो 80 पैसे लिख देते हैं. 80 पैसे में 1 एप्पल उसने खरीदा होगा, right? And when he sells 4 apples for rupees 5, so surely he is charging 1 एप्पल के लिए कितना चार्ज करेगा वो? We need to divide that 5 rupees in 4 parts, क्योंकि वो 5 rupees में 4 ही एप्पल दे रहा है, right? So that comes out to be 1.25, or you can say 125 पैसे. Jaggu, final answer is not going to be 25%, because the problem is here it was 5 apples and this was 4 apples. So first thing you need to understand the answer for this question, which is 25%, जो most of देते हैं ये गलत है. Have you understood that part, why that is wrong? Okay, now we are calculating the right way, and exactly what should be your answer. 80 paise and 125 paise. Give me a thumbs up guys if you understood this. One apple का cost उसको पड़ रहा है 80 पैसे, and वन एप्पल जब वो बेच रहा है, वन एप्पल के लिए वो चार्ज कर रहा है 125 पैसे. नाउ लुक एट द प्रॉफिट, इट्स नॉट 25%, इट इज मच मोर देन दैट. देखो कितना रुपीस का प्रॉफिट हुआ. व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट? वन एप्पल पे कितने रुपीस का प्रॉफिट, कितने पैसे का प्रॉफिट होगा? 80 पैसे एंड 125 पैसे, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 45 पैसे, and that 45 paise compared to what? With the cost price. This is the cost price and this is the selling price, right? I'm just explaining this. 36 नहीं शिवम, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, वापस तुम्हारा परसेंटेज प्रॉफिट विल बी 45 पैसे. किसके कंपैरिजन में होगा? 125 पे या 80 पैसे पे? एटी पे होगा ना. 5 9s are and 5 16s are, so answer should be 900 divided by 16. 9 by 16, it is 56.25%. So answer should be 56.25% guys. So final answer we have got it as yes, that's right now. तो शिवम क्या गलत हो रहा है? तुम कैलकुलेट क्यों गलत कर रहे हो? 36 क्या निकाला तुमने? जग्गू, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Abhishek, Jaggu, Shivam, all of you clear guys?
So the answer should be 56.25%. ओके सो एज आई सेड ये तो हुआ ट्रेडिशनल वे गाइस, ये तो बहुत मीन्स तुम्हें लिखना पड़ेगा इतना सारा, और एज सच इफ यू अप्लाई द ट्रिक्स तो तुम्हें इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट शॉर्टकट नाउ. ओके सो आई एम गोइंग टू गिव यू वन शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन. One thing you need to understand, the five apples for rupees 4 and 4 apples for rupees 5, that was not the actual quantity given. We were given with few rates. खरीदने का रेट क्या है एंड बेचने का रेट क्या है, दैट्स व्हाट. अब सुनो, तुम इस रेट पे, फर्स्ट रेट पे तुमने 1 एप्पल खरीद के 1 एप्पल बेचा एंड यू गॉट द परसेंटेज एज 56.25% प्रॉफिट. नाउ the very beautiful thing about the percentage is, so देखो guys यहाँ पे percentage profit change ही नहीं होगा. अगर तुम 1 एप्पल खरीद के 1 एप्पल बेचोगे इस सेम रेट पे, I'm talking about the buying rate, the rate at which we buy and the rate at which we sell. If we keep this rate same, doesn't matter if you buy 1 apple and sell 1 apple, or buy 100 apples, buy 100 and sell 100 apples, or simply whatever the number of your choice you can take. and hopefully numbers में guys LCM SCF basic सबको पता होगा. I'm just talking about LCM SCF because एक number हम यहाँ पे assume करेंगे. we call it as LCM method. I call this method as LCM method. and इसमें मैं कुछ बहुत numbers के details में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पे अपन profit loss कर रहे हैं, but एक simple सा logic में बताता हूँ. 5 एप्पल्स 4 रुपीज में मिलते हैं तो 10 एप्पल्स 8 रुपीज में मिलेंगे, तो हमें 5 के मल्टीपल्स में खरीदना बहुत इजी पड़ेगा और बेचते वक्त 4 के मल्टीपल्स में बेचना इजी पड़ेगा. तो जस्ट टेल मी अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 4. तो नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 4, क्या नंबर होगा? 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है, ऐसा नंबर. और सिंपली एलसीएम एचसीएफ नहीं जाना है तो मुझे ये बताओ 5 के टेबल में भी आना चाहिए, 4 के टेबल में भी आना चाहिए. दैट्स द सिंपल नंबर इज 20. तो व्हाट यू नीड टू डू, स्मार्टेस्ट वे टू डू, तुम सीधे से मुझे 20 एप्पल्स का कॉस्ट बताओ कितना होगा. इनटू कितना करना पड़ेगा, 5 एप्पल्स इंटू 4 20 होता है, तो यहाँ पे इंटू 4 करो, कितने रुपीस का कॉस्ट हुआ शिवम? 16 रुपीज खर्च हो गए अपने 20 एप्पल्स खरीदने के लिए, हमारे 16 रुपए खर्च हो गए. जग्गू, शिवम, अभिषेक, राइट. एंड इफ आई सेल 20 एप्पल्स, सो 4 into 5 से मल्टीप्लाई, सो 5 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ₹25. तो ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है. ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, अगर तुम्हें समझ में आ गया क्या करना है तो मैं यहाँ पे ही खत्म कर सकता हूँ. 5 apples 4 rupees, so 20 apples 60 rupees, and 4 apples 5 rupees में, तो 20 apples 25 rupees में. so my cost price is 16 and selling price is 25. क्या ये समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? और वापस से is as short as that जो मैंने अभी बताया. okay, now the simple thing is cost price is 16 and selling price is 25. So definitely I have a profit, and the profit of ₹9, and percentage profit will be in comparison with the what? Do not forget that 25 पे calculate नहीं करना है. This is selling price, this is cost price. So 9 by 16 into 100, and it is the exact the same calculation जो हमने अभी किया था, is 56.25%. 16 का टेबल तो सबको आना चाहिए, should not be that tricky to calculate, right? So hopefully all of you understood the shortcut and how it is working. means सुनो, अब किसी ने 20 एप्पल्स खरीदे 20 बेचे तो भी वो प्रॉफिट उतना ही रहता है. that's the concept of percentage. guys understood this part? अब मैं सेम रेट पे 100 एप्पल्स खरीदता हूँ और सेम रेट पे सेकेंड रेट पे मैं 100 एप्पल्स बेच देता हूँ, तो उससे कुछ नहीं होगा. मेरा परसेंटेज प्रॉफिट अभी भी 56.25% ही 56.25% ही रहेगा. ऑल ऑफ यू क्लियर गाइस?
Hopefully you are enjoying the session and you're getting what exactly the concept of percentage profit loss is. We are doing it from very basics because this is a really important topic from all the exam point of view. Right? Done? Yes, that's great. So all of you with me, okay. So guys, it's really important every time you learn the topic, do it from the basic, go slow, that perfectly fine. Because अगर तुम्हें स्पेस में जाना है आगे, बहुत ज़्यादा पेस से करना है, स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो तुम्हें बेसिक्स बिल्कुल क्लियर चाहिए. Then only you can speed up the things. Okay, let's go ahead, guys. By selling 45 lemons for rupees 40, a man loses 20%. How many should he sell for rupees 24 to gain 20% in the transaction? I'm quite sure this question में means question सबको समझ में आता है, क्या करना ये भी पता रहता है, but I don't know तुम calculations में stuck होते हो या कुछ misinterpret करते हो. And this is a general observation. This kind of question comes, a few of the students get stuck. So I'll give you 1 minute to solve this question. Think about it. That's perfectly fine. Go slow. That's perfectly fine. 1 minute से ज्यादा कुछ बहुत लेंदी कैलकुलेशंस इसमें नहीं आएंगे. Numbers are not that tough. Try it for a minute and try to give it answer at your own. सोचो थोड़ा सा. By selling 45 lemons for rupees 40 means 40 rupees is the selling price. 45 lemons रुपीज 40 में बेचा तो उसको लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ 20%. So how many should he sell for rupees 24 to gain 20%? नाउ अगर तुम्हें प्रॉपरली समझ में आया था, इसके पहले का जो क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आया फर्स्ट जस्ट बिफोर दिस क्वेश्चन जो हमने किया, वो अगर तुम्हें बहुत अच्छे से समझा है और तुम एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट समझ पाए हो एंड यू आर एबल टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू, दिस क्वेश्चन. Any answer? Jaggu, Shivam, Abhishek? Do not get into this part unless and until अगर तुम्हें उसका कॉस्ट प्राइस पता नहीं चला है तो. पहले क्या सोचो गाइस, ये 24 लेमन्स में 24 रुपीज में कितने लेमन्स बेचने चाहिए हमें, 20% फिट चाहिए. ये 24 रुपीज में कितने बेचने हैं ना, ये अभी मत सोचो. जस्ट थिंक अबाउट दिस 45 लेमन्स, दैट्स परफेक्टली फाइन. देन हम सोचेंगे कि 24 कितने में बेचने. पहले तुम ये तो सोच लो कि मुझे 45 कितने में बेचने पड़ेंगे. ओके, so I'll keep this transaction for 45 lemons. Okay, and for 45 lemons, selling price is 40 and there is a loss of 20%. So what is the cost price? Can you tell me the cost price, Jaggu, Abhishek, Shivam? ये तो आना चाहिए शिवम. 20% कॉस्ट लॉस किस पे हुआ है? 20% लॉस होता है कॉस्ट प्राइस पे. मतलब ये जो है प्राइस, दिस मस्ट बी 80% ऑफ प्राइस. राइट शिवम? ये तो हमने अभी सीखा बेसिक क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के. तो 80% ऑफ कॉस्ट
cost price must be selling price, that is 40. So 80% is 4 by 5. Hopefully you understood 4 by 5 कैसे आया, 80 by 100 into CP, this must 40, 4 gets cancel, यहाँ पे आएगा 10, तो cost price must be 50. तो बेसिकली वो जो लेमन खरीदे हैं 45 उसने खुद खरीदे हैं 50 रुपीज में. इज इट ओके? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल ऑफ यू? Then he wants to sell it at a gain of 20%. That means अगर वो 45 लेमन बेचना चाहता है तो कॉस्ट प्राइस 50 है एंड अभी मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए. ओके, देयर शुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 20%. सो डेफिनेटली सेलिंग प्राइस में कितना रहेगा? पहले 20% लॉस हो रहा था, 20% प्रॉफिट मतलब इसी का रहेगा. 20% ऑफ सीपी इज 10, सो दैट इज 50 प्लस 10. 50 plus 10 has to be 60, right? मीन्स अभी सुनो, उसको अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसको 60 रुपीज में वो 45 लेमन्स जो खरीदे हैं वो बेच सकता है. क्या ये तुम्हें समझ में आ गया? जग्गू, अभिषेक, शिवम, आर यू क्लियर अबाउट दिस? We have not did anything with the number of lemons. I keep that 45 lemons same and मैंने डिसाइड किया कि मैंने 40 रुपीज में बेचे तो मुझे 20% लॉस हुआ. दैट मीन्स उसने खरीदा होगा उसको 50 रुपीज में एंड 50 रुपीज की चीज अगर मुझे 20% प्रॉफिट बेचनी है तो मुझे 60 रुपीज में बेचना पड़ेगा. That simply means if I want 20% profit, I need to sell 45 lemons for ₹60. अब हमें ये बोला नहीं, हमें क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है. हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर ₹24? तो उसको 24 में कितना बेचना पड़ेगा? तो फर्स्ट थिंग डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं इसलिए मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं. ऐसे कुछ नहीं 5 से डिवाइड करना है, तुम 3 से भी डिवाइड कर सकते हो. ओके, 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कैन आई से 12 रुपीज में कितने लेमन्स मिलने चाहिए डिवाइड बाय 5 करने के बाद? 12 रुपीज में 9 लेमन्स. व्हाट शुड बी द आंसर? जग्गू, अभिषेक, क्या आंसर होना चाहिए? शिवम, तो ₹24 में कितने लेमन्स बेचने पड़ेंगे? 24, 9 का डबल कितना? 18. So the simple answer is 18 lemon. और इतना सब करने के लिए तुम्हारे पास 1 मिनट होता है. और कैसे कर सकते हो? द ओनली थिंग, अगर तुम्हें एग्जैक्टली याद है क्या करना है, 40 मतलब 80% तो तुम्हें सबसे पहले 50 मिलेगा. 50 में से उसका 20% तो ओरली निकाल सकते हो, 10 रुपए. तो 50 प्लस 10 होता है 60 रुपीज में 45, तो 24 रुपीज में कितना? Answer is 18. That's the simple way to do. Right? Hopefully all of you understood this part. Let's move. Next question. The selling price of 18 notebooks is same as the cost price of 15 notebooks. How to solve this? The selling price of 18 notebooks is same as the cost price of 15 notebooks. It's a simple question from profit and loss, typical one. Selling price of 18 notebooks. So simply you can say 18 times of selling price of one notebook must equals to 15 times of the cost price. So first of all, tell me if it is profit or loss. Is it profit or loss? Shivam?
the best way to do this, use the ratios. Always remember, ऐसे इक्वेशन करोगे ना, use ratios. That's the key point here. Means अगर तुम्हें क्विक आंसर चाहिए तो, नहीं तो फिर तुम इक्वेशन से कर सकते हो. Selling price upon cost price must be in the ratio 15:18. 15/18. So selling price 15, cost price 18. Hopefully you understood this. Yes, right Shivam, there is a loss. So 80 rupees में खरीदा and 15 rupees में बेचा, definitely ये तो कम में बेच रहा है, तो there is a loss. There is a loss of rupees 3. 18 minus 15, right? And if you want to percentage loss, yes, right Jagu, you're correct. 3/18 into 100, that comes out to be 16.66% loss. Perfectly fine. That means you're understanding. Right, have you used the same method? शिवम, तुमने सेम मेथड से किया जग्गू, या तुमने कुछ डिफरेंट यूज किया, डिफरेंट मेथड यूज किया? ओके, दैट्स ग्रेट. Okay, so other way to do it would have been like this. Means if you can you need to frame the equation. That's perfectly fine. इसके बिना तो नहीं हो सकेगा. Anyways, तुम कैसे भी करो. So selling price must be 15/18 into cost price. And if you solve this, some of the students जिनको decimal fractions में समझ में आता है and they don't want to use the ratio, but my recommendation, you should use the ratio. And अगर तुम ratios में अच्छे नहीं हो तो तुमने ratio proportion practice करना चाहिए. Definitely you should practice the ratio and proportion topic. That's really important for the calculation purpose. Complete ratio proportion, simply a calculation based topic. Okay, but anyways, अगर किसी को यहाँ पे डेसिमल नंबर्स में कंफर्टेबल है जो लोग, वो लोग ऐसे ट्राई कर सकते हैं. 3 से डिवाइड करो 5/6 and 5/6 is 0.8333 into CP. Now if you look at this 0.833, मतलब ये होता है 83.33%. So selling price is 83.33% of the cost price. I'm not sure कितने लोगों को ये comfortable लगता है या easy लगता है, but जिनको decimals में समझता है उनके लिए easy हो. ठीक है. So there is 83% में बेचोगे तो of course loss तो 83.33% में बेचोगे तो तुमने 100 की चीज 83.33 में बेचा, so there is a loss of 16.6%. That's the simple way you can take this way. But definitely my recommendation, go for the method. This is easy, right? Try this one. Again, an important typical question from profit and loss. A dealer sold 2 watches for rupees 6,600 each. Now most important thing is here, यहाँ पे 2 watches बेचे गए हैं और दोनों का selling price same है, दोनों का cost price अलग अलग है. Definitely you can make out from the question.
6,600 ईच लिखा है, बी केयरफुल, कुछ लोग ये ईच पढ़ते ही नहीं है, तो होपफुली तो जो अभी सॉल्व करें ये पढ़ लिया सबने। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट वॉच is 6,600 as well as the selling price of the second watch is also 6,600. This is the question. I can surely say all of you can do it with me. That's perfectly fine. मैं कुछ यहाँ पे explain नहीं करने वाला हूँ, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। First watch he made a profit of 10%. One thing I can surely say, अगर 10% प्रॉफिट हुआ है तो ऑफकोर्स उसका कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा, राइट जग्गू? कॉस्ट प्राइस कम होगा, मतलब ये जो वॉच है उसने 6,600 से कम में खरीदी है। यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट। शिवम, जग्गू, अभिषेक, क्विकली टेल मी। You know, all of you know how to calculate it now, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे 5-6 क्वेश्चंस कर चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेशन टुडे। एंड इवन अगर परसेंटेज तुम्हें याद होगा, तुम कोरिलेट कर पाए हो, तो परसेंटेज में तो कंप्लीटली ऐसे ही सब किया है हमने। देन इन द ऑन द सेकंड वॉच ही लूज 20%, ओके, so he lost, there's a loss of 20% here on this watch। लॉस हुआ है मतलब वो महंगा खरीदा गया था, वो वॉच 6,600 से ज्यादा में खरीदा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, जब भी तुम कॉस्ट प्राइस निकालोगे, डोंट टेल मी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड तुमने निकाला और वो 6,600 से कम आया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसको 20% लॉस हुआ है तो ऑफकोर्स वो 6,600 से ज्यादा ही होगा। यू नीड टू टेल मी, ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन गाइस क्विकली, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड कितना आया एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कितना आया। जग्गू, अभिषेक, शिवम, बोलो जल्दी से। यहां पे 10% प्रॉफिट है। 10% प्रॉफिट मींस दिस प्राइस इज 110% ऑफ कॉस्ट प्राइस। 10% हमेशा इस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस 1 प्लस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस 1 is selling price, or simply you can say 110% of cost price 1 is 6,600। कितने लोगों ने इसका 10% निकाला? डू नॉट कैलकुलेट 10% ऑफ 6,600। इफ यू डू, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। Okay, hopefully you understood that. Yes, right. So Shivam, you have got completely right. That's perfectly fine. That's really great. So जो confusion है वो तो नहीं हो रहा है अभी तुम्हें। Hopefully you know now, you clearly know what is cost price, selling price, mark price, and there is no confusion anywhere. Okay, so cost price 1 is 6,000। ओके, मैं इतना सब लेंदी स्टेप बाय स्टेप नहीं करने वाला हूँ। अभी एक सिंगल स्टेप में तुम्हें आंसर आना चाहिए। सेकंड का 20% लॉस का मतलब होता है 80% ऑफ सीपी इज एसपी। तो 80% इज 80 by 100 into कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस इज सेम 6,600। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन you need to just divide it by 80, that's it। it's not a tough calculation at all। 8 का टेबल सबको आना ही चाहिए। 6,600 into 10 upon 8, 825, right? so what is the total cost? फाइनल आंसर बोलो शिवम, क्या होना चाहिए? हाउ मच ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस? ओवरऑल ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, चलो क्विकली। कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इज 6,000 प्लस 8,250, that comes out to be 8 plus 6 is 14,250। that was the cost price। and if you look at the selling price दोनों के सेम थे, 6,600 plus 6,600, that comes out to be 13,200।
तो मुझे बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? There is a loss and loss is of 1050. परसेंटेज लॉस नहीं पूछा है, हमें सिर्फ लॉस अमाउंट पूछा था, दैट्स इट. अ टिपिकल परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन जो डेफिनेटली आना ही चाहिए. इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन क्लब हो गए, ऐसे हो गए, फर्स्ट वॉच के लिए अलग, सेकंड वॉच के लिए अलग, और वो मिला दो कॉस्ट प्राइस तो वो हो गया अपना ओवरऑल ट्रांजेक्शन, राइट? Not a big deal to solve once you understand the concept, and if you are good at the calculation, average calculations भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल लेंथी कैलकुलेशंस नहीं है. डोंट गेट स्टक इन द कैलकुलेशन. पॉजिटिवली कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा पॉजिटिवली करो गाइस. यू शुड एंजॉय द कैलकुलेशंस, अदरवाइज तुम्हें कैलकुलेशंस बोरिंग लगते हैं तो फिर तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में और मुश्किल होते जाएगा. सो ट्राई टू मीन्स अगर तुम्हें इंटरेस्ट कब आएगा? बोरिंग तभी लगेगा जब तुम्हारा कैलकुलेशन स्लो है. तो अगर कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट रखना है तो तुम्हें बेसिक्स पे वर्क करना होगा. अगर कैलकुलेशंस वीक है तो कीप रिमाइंडिंग द टेबल, स्क्वायर्स, थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करते रहो रेगुलरली 15-20 मिनट्स डेली. श्योरली उसके बाद तुम्हारे कैलकुलेशंस थोड़े से फास्ट हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. Okay, so let's go ahead guys. The percentage profit earned by the selling the percentage profit earned by selling an article for rupees 1920 is equal to the percentage loss incurred by selling the same article for 1280. Of course 1920 पे profit हो रहा था और 1280 पे उसको loss हो रहा है, और दोनों बार the percentage profit earned initially was equal to the percentage loss incurred in the second transaction, that is when he sell it at a loss of means at a price of 1280. Okay, at what price should the article sold to make 25% profit? So Shyam Jagrut and those who are watching this video, Abhishek, so understand one thing guys, this is the question of max to max 30 seconds. Quickly try it at your own, and after you try it, नहीं आता है perfectly fine, but अगर आता है तो तुम सोच के देखो, उसके बाद में ट्राई करने के लिए टाइम नहीं दूंगा. I'll just explain what exactly it is. Anyone? Do you think is it that easy? Okay, understand. One thing you must have understood. एक पॉइंट है जहां पे 1920 पे उसको प्रॉफिट हो रहा है. Let's say that's X% profit. Right, Jabbu? तो 1280 पे को minus X% हो रहा है, that is loss of X%, and here is the profit of X%. Can you just imagine this? Actually ये ड्रॉ नहीं करना है, ये मैं सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए बता रहा हूँ. तो अगर एक जगह प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह लॉस हो रहा है, so this middle value must be here, there will be something here, average of these two, you can say average बोलो या middle बोलो. एक प्राइस होगा सेंटर पे जहां पे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा. Am I right? जग्गू, अभिषेक, शिवम, सब लोगों को समझ में आया? तो whosoever watching this video hopefully understood the middle value हम यहां से निकाल सकते हैं. So what is the middle value? Simply इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1920 plus 1280 divide by 2, and that will definitely give you the cost price, because loss भी cost price पे होता है, profit भी cost price पे होता है. Am I right?
So that comes out to be 1600. So यहाँ पे 1600 जो होगा price is the cost price. And now we know the cost price is 1600 and then the profit of 25%. 25% is 1/4 of 1600. That is 400. So the selling price must be 1600 plus 400. New selling price to get the 25% profit should be 2000. So final answer for this question is 2000. Hopefully you understood this. So if you know this trick, it's simply ये part I'll just square. ये तो लिखने का काम भी नहीं पड़ेगा तुम्हें. You can just start from here and get this done within 30 seconds. That's it. Was that easy, guys? Have you understood? Give me a thumbs up if you understood up till now. All of you with me? Let's quickly speed up. Suresh bought 2 bikes. He sold the first bike at 10% profit and the second one at a profit of 25%. The selling price of the second bike is 25% more than the first bike. What is the approximate profit percentage on the both the bikes? You can spend 2 minutes of time for you for this question to solve. Think about it. By the time I'll just explain exactly क्या transaction हुआ है. Suresh bought 2 bikes. We don't know the cost price and selling price. दोनों के cost price different हो सकते हैं, दोनों के selling price different हो सकते हैं. There is nothing given कि दोनों बाइक अपने मर्जी से हमें assume नहीं कर लेना है कि वो दोनों same ही होंगे. It's not compulsory. Suresh bought 2 bikes and he sold first bike at 10% profit. So let's say first bike and second bike. I don't know the cost price of any bike. So I'll assume first bike's cost is 100x. So surely selling price of the first bike must be, it is sold at 10% profit. That means selling price has to be 110x. Right? Okay. Now we don't know the cost price of the second bike, but we know first one is sold at 10% profit and the second one is sold at 25% profit. We don't know the cost price of the second bike, but one thing we know, हमने सिर्फ एक ही assume किया, हमने second bike के बारे में अभी तक कुछ भी assume नहीं किया. One thing we know, the selling price of second bike is 25% more than the first bike. Now we know this is 110x and from here the selling price of the second bike is 25% more. So 25% of 110, 25% is 1/4. So 1/4 of 110x, that comes out to be 27.5x. So this must be 137.5x. And one calculation related trick, you need not to calculate this, क्योंकि यहाँ से 25% बढ़ा के तो ये आया है और यहाँ से 25 बढ़ा के भी यही आ रहा है. That means this value is also 110x, because यहाँ भी 25% इंक्रीज है, यहाँ भी 25% इंक्रीज है. ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन को समझने का. That's it. That's why that's the end of the question, you can say. Have you calculated up till now, guys? अभी तक सबका हो जाना चाहिए था. मैंने सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन किया and that's done now. बोलो, अभी थोड़ा सा लास्ट ओवरऑल ट्रांजेक्शन का हमें कैलकुलेशन करना है. दैट्स इट. होपफुली यहाँ तक सबने कर लिया होगा खुद से. दोज आर वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ये हो जाना चाहिए तुम्हारा अब तक. 100x plus 110x, that is 210x is the cost price and the selling price is
247.5x, so that is the selling price greater than cost price. So the percentage profit here must be 47.5x profit compared to what? It is compared to 210x into 100, so that comes out to be 475. एक जीरो में यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, 475 एक ऊपर डेसिमल के लिए काम में आ जाएगा, डिवाइड बाय 21. सो 21 का 2 टाइम्स कर देते हैं तो होता है 42. So 475 divided by 21. It's not, it will be in decimal point. 42 यहाँ पे आएगा 55 in 2 times. It is approximately, so answer options are quite means you can just neglect these two. Then 22% and 18% we are left out with, so 21 का 2 times होगा 42 times, should be close to 55. It is 22.5%, so approximately it is slightly far from these values, but we'll go for this one, right? Let's quickly solve few more questions related to this topic. So a trader sells article at its cost price but uses faulty balance which reads 1000 grams for 900 grams. So basically actually में वो सिर्फ 900 ग्राम दे रहा है but दिखाएगा कितना 1000 ग्राम. So this is a very important question and really interesting to know. First thing you need to understand guys, यहाँ पे difference लग रहा है सबको 100 ग्राम. 100 ग्राम मतलब 10% होगा. Most of the student answer it at 10% is a wrong answer, and those who are curious to know, I'll explain why this 10% is wrong. Okay, so why the 10% is wrong here? The concept is, all of you are with me guys? Okay, 10% is wrong. Anyone want to answer this? They can quickly drop in the comment section if you know the answer. Let me see if you can manage. मीन्स तुम्हें मेथड पता होना जरूरी नहीं है. तुम्हें अभी तक नहीं भी किया होगा, तुम पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो तो भी तुम अपना कॉमन सेंस यूज करके आंसर दे सकते हो. इट्स नॉट कंपलसरी कि तुम्हें जब कुछ पता होगा कोई मेथड तो ही ये सॉल्व होगा. टोटली डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज. ऑल ऑफ यू नो द थिंग, बेसिक थिंग सबको पता है तो श्योरली ये टैकल कर सकते हो. Anyone, any answer guys? Okay, यहाँ पे क्या हो रहा है 900 ग्राम. लेट्स से शॉपकीपर जब खुद खरीदता है के लिए हम कॉस्ट लेते हैं 100 rupees and he purchased 1 kg. Okay, so that means he is getting 1000 grams for rupees 100. That's a simple small assumption we can take. Okay, और doesn't matter तुम दूसरा रेट लोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा. This is what we'll assume. Now just tell me, he's just selling 900 grams and वो बता रहा है वो 1 kg है. The weight shown in pan will be 1 kg and he'll charge rupees 100 for. So 900 ग्राम का selling price 100 रुपीज है. Now understand one thing, 900 ग्राम जब वो खुद खरीदता है तो देखो यहाँ पे 1000 ग्राम 100 रुपए में मिलता है. जब वो 900 ग्राम खरीदेगा so he'll just be paying rupees 90. So cost price of 900 gram is just rupees 90. So he is making a profit of
rupees 10 in this transaction, but that profit is not compared to 100. That profit will be compared to 90. So the answer is not 10%. The answer will be 1 by 9 into 100 more. Hopefully all of you remember the fractions, smart fractions जो हमने percentage में सीखे थे. That is 11.11% profit, right? Sure. Hopefully all of you understood this. Let's move ahead and try few more questions from profit and loss. A retailer buys 260 pens. He sells some of them at a profit of 20% and the remaining at a loss of also a profit of 30%, and he gains 24%. So one thing we'll learn it later also in mixtures allocation. वो shortcut हम यहाँ पे use कर लेंगे आज. चलो. Understand one thing, कुछ पार्ट 20% प्रॉफिट में बेचा है एंड कुछ पेन्स 30% लॉस में बेचे, सॉरी 30% प्रॉफिट में बेचे. या फिर लेट्स नॉट गेट इनटू द मिक्सचर्स एलिगेशन, सिंपल कॉमन सेंस से मैं बताता हूँ तुम्हें. ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको 24% प्रॉफिट, तो 24 यहाँ से 6 का डिफरेंस है, यहाँ से 4 का डिफरेंस, तो ये नीचे आ गया. तुम्हें क्या करना है, ज्यादा पेन अगर उसने 20% पे ज्यादा क्वांटिटी बेचा होगा, 20% पे ज्यादा क्वांटिटी बेचा होगा तभी ये नीचे आया होगा. बट ये 4 और 6 तो डिफरेंस तो उधर ज्यादा जा रहा है, तो हम इस डिफरेंस को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे. क्या कर देंगे, 6:4 कर देंगे, राइट. तो अगर इधर 6 पेन तो इधर 4, टोटल 10. हमें पता है टोटल 260 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 26 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे, तो 26 into 4 and 26 into 6. जग्गू, शिवम, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अभिषेक, 26 into 6, 26 into 4, so it should be 104 and 156. हमें कौन सा पूछा है, how many pens did he sell at the profit of 30%? At the profit of 30%, it should be 104. The first answer. Let's speed up, guys. Go ahead with those questions. Next one. This is the question all of you can manage. चलो quickly बोलो क्या आंसर होना चाहिए. The price of a jewel passing through 3 hands rises the whole by 65% if the cost of the second seller earn 20% and 25% profit respectively. Find the percentage profit earned by the third seller. So if the price is 100, the next price, initially it was, if it is 100, the first seller sells second and earn 20%, so it must be 120. Now it was 20% of 100 now, but for the next seller his cost is 120. This 20% was on 100. Next seller will earn 25%, but that is not 25% of 100, it will be 25% of 120. So 1/4 of 120, that comes out to be 30. So plus 30 get, that is 150. And finally we know from the initial cost, so the rise on the whole by 65%, the final, that is already
that is 165, that is 65%. Now here just an increase of 50, but it's not 15%. Okay, because 15 compared to 150 into 100, that's just 10%. So answer should be third, that is 10%. Let's move ahead. Next question. A manufacturer undertakes to supply 2000 pieces of a particular component at rupees 25 per piece. It's basically, if you want to solve this question, the first thing you need to understand is उसने 2000 pieces supply करने हैं and one piece 25 rupees का है. That means the complete deal is of 50, right? Then according to his estimate, even the 5% fail to pass a quality test. मीन्स 5% निकाल दो फिर मल्टीप्लाई करो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है. इफ इट इज डिक्रीज बाय 5% मीन्स जो भी एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन दिया हुआ है 50,000 की डील में अगर 5% कम भी हो जाता है मीन्स क्वालिटी टेस्ट में, उसकी वजह से क्या होगा, 5,000 रेवेन्यू अफेक्ट होगा. तो 5% कितना होता है इसका, 10% इज 5,000, सो 5% विल बी 2,500. अगर इसमें 2,500 का लॉस भी लेना पड़ता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 47,500 में भी अगर डील फाइनल हो जाता है, still he will be in the profit. He'll make a profit of 25%. Yes, actually his cost is much more lesser as compared to this. Okay, so this is the selling price where he is gaining 25%. So we are given selling price as 47,500, you can say, and the profit in this deal is 25% profit, and we are supposed to calculate the cost price now. So I want to calculate the cost price here. So the cost price will be so this selling price is 125% of the cost price, that is 125%, 125 upon 100 into cost price must be 47,500, right? So if I want to do the calculation part, it's simply 5 by 4. If you divide it by 5, 5 9s are 5 5s are 9,500 into 4, that comes out to be 9 4s are 36. It will be 38,000, right? Okay, so 38,000 हो गया उसका cost price actual जो spend कर रहा है. Okay, however as it turned out 50% components were rejected. The problem is ये deal 47,500 में finally नहीं हुआ and 50% were rejected. Means actually what happened is 50% rejected. So deal was of 50,000, he'll just getting 25,000. So now the problem is definitely he'll be in loss. So 38,000 तो cost था, but 47,500 तो selling price था, वहाँ तो profit हो रहा था. Loss कितना हुआ, 38,000, 25,000. So difference, this difference is the loss amount. That's what we are supposed to calculate. It is 13,000 rupees. That is answer option 2. Really interesting questions. Just a calculation stuff, you can say. Okay, let's go ahead with the next question. Sorry, try this one. Tarun got 30% concession on the label price and sold it for 8,750 with 25% on the price he bought. What was the label price? Again, a simple question and typical profit and loss question, you can say, जो हमें बहुत frequently use करना पड़ता है, वही concept यहाँ पे use हुआ है. So we know this is the selling price.
जब उसने बेचा, तरुण ने जब खुद बेचा तब का सेलिंग प्राइस है, और उसने 25% प्रॉफिट भी कमाया. So that simply means 125% of his cost price must be that selling price, the 8,700. So 125 upon 100 into cost price must be 8750. And if you solve this, it's really easy. 5 by 4, 5 से अगर हम divide करते हैं, so it will be 1750 into 4. Cost price must be 1750 into 4. 4000 हो जाएगा, 750 का 4 times हो जाएगा 3000. This total comes out to be 7000, right? So cost price is 7000 and he's selling at 8750 and he's making profit of 20 there, right? Now Tarun, अब problem is ये तो उसने खरीदा, right? But he has gone the 30% concession, so this is just the 70% of label price. After 30% discount, Tarun bought it at just 7000. 70% of the label price, 7000. So definitely it's really clear. Label price 10,000. To the calculation parts, it's very simple. So the label price is 10,000. So guys, speed up quickly. Try this question. A person incurs a loss of 5% by selling a watch. यहाँ पे B नहीं, buy होना चाहिए. By selling a watch for rupees 1140 rupees, 1140 rupees, at what price should the watch be sold to earn a profit of 5%? Again, a typical question of profit and loss. There is a loss of 25% and this is the selling price we are given with. So definitely 5% loss simply means 95%, and loss is always on cost price. So 95% of the cost price is 1140. So 95 upon 100 into cost price 1140. Cost price must be 114, 104 on, or simply you can keep this as 1000. सेपरेट रखो, उतना ज़्यादा इजी होगा. ई जीरोज अलग से, और ये 95 होगा. तो 95 से ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, सो व्हाट डिवाइडेड बाय 5. तो अगर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 200 6 टाइम्स 2 into 6 is 1200. So cost price must be 1200. At what price should the watch should be sold to earn 5%? So I want to earn 5% on this. So 5% profit, 10% is 125% is 60. So answer is 1200. Right. So at what price should the watch be sold? So answer is 1200. Right. Let's go for the next. Okay. This is the one way to solve. Otherwise you can use the ratios as well. तो मैं ratios, how to use the ratios, let's discuss one more part. अपने जो last thing I want to focus on, emphasize on ratios once again, because हमने ratios यहाँ पे सीखे हैं आज. So let's see how many of you can solve that way. अगर इसको रेशियो से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? The other way. The last question for the day.
last method I'm going to discuss based on for this question. That's it for the day. Okay, so guys, ratio simply says अगर if there is a loss of 5%, that simply means 100 rupees की चीज हम 95 rupees में बेचेंगे. And if I take the ratio, this will be definitely 20:90, and we know the selling price is 1140, is 60 times of this. So I'll just multiply it by 60 and I'll get the answer as right. Next thing, if I want a profit of 5%, I'll just sell 100 rupees की चीज हमें कितने में बेचनी पड़ेगी? 105 में बेचना. Will be the new selling. Now we know our cost price is 1200 rupees. So you need to multiply it by 12. Simply multiply it by 12. 12 का टेबल सबका होता है. 12 5 is 60. 1206. That's the easiest. Okay, so guys, hopefully you enjoyed the session and all of you understood the tricks and techniques. So these were the questions from profit and loss, basic questions हमने किए. Now tomorrow I'm going to take one more session on profit and loss only, but जिसमें मैं कोई concepts नहीं बताऊंगा. ये tricks definitely हम use करेंगे. I'll revise the things for you in between of the questions. Depending on the questions, मैं थोड़ा सा key points revise करते रहूंगा. But tomorrow will be just a practice session, and do not miss it. The only thing to understand and learn this quantitative ability or arithmetic section, you can say, is just a practice. तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा questions हो सकते हैं तुम solve करो. तुम आज ही है कुछ questions तुम खुद से practice करके देखो, and join me tomorrow at 10 PM. We'll be solving again questions of profit and loss, moderate to tough level. So tomorrow the level of difficulty will be higher compared to today's session. Okay, so those who are willing to go for the plus subscription, they can come on Unacademy Plus platform, guys, where you will get the direct interaction with me, my team, and many other top educators of India. There are the facilities like a leaderboard and everything, so you'll be able to interact with me, and there are many more benefits of this plus subscription. You'll get the mock test and complete support for your preparation. So do join us on Unacademy, and do not forget to use this code SHAM1 to avail 10% of discount. So those who are willing to go for the plus subscription, they can use my code, discount code SHAM1, to avail 10% of discount. And last but not the least, guys, join us on Telegram so that you'll get the PDF material of each and every session that we conduct on YouTube as well as on Unacademy. And do not forget to subscribe to our channel YouTube. Unacademy CAT4MBA is our new channel for CAT, and don't forget to press the bell icon so that you'll be notified about all the upcoming sessions, live sessions that we conduct on YouTube. That's it for the day, guys.